Boys and girls, are you not entertained? क्या crazy week of football it's been. This is the reason why we all love and watch football. Champions League nights का वो aura, that feel was at its highest level. Peak football जिसको बोलते हैं, वो देखने को मिली हमको. अगर कोई फुटबॉल ना भी देखता हो और उसने इस वीक चैंपियंस लीग के मैचेस देखे, तो that guy will fall in love with football. Hello and welcome back to another video. Welcome back to my channel Sardar Chels. भाई it was one of those nights in the Champions League जो actually define करता है इस competition को. Action packed, full of entertainment, edge of the seat drama, सब कुछ हुआ. Especially in the two games that we are going to talk about. First off, Barcelona versus Benfica. क्या मजेदार मैच था for a neutral to watch. The start to the game only was so crazy. First attack of Benfica in the second minute and they scored. फिर 10th minute में Balde got fouled in the box and it was a clear penalty which Lewandowski took, and with Lewandowski हमको पता ही है it was very easily converted and it was 1-1 within 10 minutes. फिर 21st minute में शेज़नी भाई साहब अपने आप को सुपरमैन समझते हुए बॉल क्लियर करने आए and he completely missed it. The ball fell to Pavlidis, open goal, no defense. He scored and it's 2-1 to Benfica. सुपरमैन तो नहीं बट सांता क्लॉज बन के एक गोल जरूर गिफ्ट कर दिया शेज़नी ने बेनिफिका को. शेज़नी को देख के गेस करो मुझे किसकी याद आई. The one and only रॉबर्ट सैंचेज. भाई एकदम सेम हरकत है. शेज़नी का फुल प्लान था कल रॉबर्ट सैंचेज बनने का. In the 29th minute, he was at it again. He made a blunder, came out to get the ball, fouled the player and gave another penalty. Pavlidis, जिसने बेनिफिका के पहले दो गोल्स मारे, he took that penalty, converted it very easily and he got his first half hat trick. Benfica are 3-1 up now. Then begins the second half and we saw one of the most weirdest goals ever. Benfica के कीपर ने एक प्रॉपर गोल किक ली विद फुल पावर और वो जाके सीधा राफीनिया के हेड पे लगी. उसको खुद नहीं पता था and the ball went into the net and it was 3-2 Barcelona. Crazy scenes it was. End to end football चल रही थी. 62nd minute में शेज़नी was there again to make Robert Sanchez proud. अपने ही डिफेंडर आरूहो के साथ मिक्सअप हुआ उसका एंड आरूहो से ओन गोल हो गया. नाउ इट्स 4-2 बेनिफिका. बट रुको, अभी गेम खत्म नहीं हुई, अभी और भी बहुत तमाशे होने बाकी थे. इसके बाद लमीन यमाल गॉट फाउल्ड इन द बॉक्स एंड दैट वाज अनदर पेनल्टी. गेस हु टुक इट? लेवेंडोस्की. एंड नाउ इट इज 4-3 बार्सिलोना. लेकिन बेनिफिका पे प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया था बिकॉज इट वाज टाइम टू सी कि बेनिफिका ये 4-3 लीड को अब होल्ड कर पाती है कि नहीं. और वही हुआ. बार्सिलोना स्टार्टेड पुशिंग हार्ड. एरिक गार्सिया को 86 मिनट में एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी मिली विच ही टुक विद अ ग्रेट हेडर एंड नाउ इट वाज 4-4 बार्सिलोना. क्या ही मजेदार गेम थी यार. नो क्वाइट मोमेंट्स इन द मैच. फिर तो कमाल ही हो गया. एडेड टाइम के फाइनल कुछ सेकंड्स बचे थे. बेनिफिका गॉट अ फ्री किक व्हिच लुक्ड लाइक द लास्ट चांस ऑफ द गेम एंड दे ऑलमोस्ट स्कोर्ड फ्रॉम इट. फिर जो हुआ उससे मुझे उस लेजेंडरी मोमेंट की याद आ गई जो 2012 चैंपियंस लीग सेमीफाइनल चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना में हुई थी. डेजा वू सीन्स ब्रो. बारसा के बॉक्स से बॉल क्लियर हुई एंड इट फेल राइट इन द फीट ऑफ राफीनिया जस्ट लाइक एशली कोल इन 2012 क्लियर्ड द बॉल एंड इट फेल राइट इन द फीट ऑफ फर्नांडो टोरेस. Rafinha ran towards Benfica's goal. He cut in, took a shot, and now it is 5-4 Barcelona from the last kick of the game. Mad scenes. इस गेम में सब कुछ था. फ्री गोल्स, ओन गोल्स, पेनल्टी, हैट्रिक, रेड कार्ड. व्हाट अ गेम ऑफ फुटबॉल इट वाज. एक फुटबॉल फैन को जो जो चाहिए होता है इस गेम में सब कुछ था. थोड़ा मुझे बुरा भी लगा बेनिफिका के लिए बिकॉज दे प्लेड रियली वेल एंड दे पुश्ड रियली हार्ड. बट बार्सिलोना मैन, व्हाट अ कमबैक. इनक्रेडिबल कमबैक. Now let's get on to the City versus PSG game. A proper Champions League epic this game was. दोनों टीम्स के लिए super important मैच था because Manchester City was 26th and PSG was 24th in the table. First half में तो PSG ने Manchester City को full on dominate किया. PSG were creating loads of chances. Fabian Ruiz का एक attempt off the goal line clear हुआ. Then Hakimi even scored in first half added time. But VAR check के बाद it was ruled offside. Second half started with a bang for Manchester City. उन्होंने एक ही पल में वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए. Grealish scored within 5 minutes of the second half against the run of play. 5 minutes later, Grealish turned provider. उसका एक deflected shot Haaland के पास गया, which he scored and Manchester City
were now 2-0 up. Grealish ने इस पूरे season कुछ नहीं किया, but in this game he was getting a lot of space on the right side and he took his opportunities really well. But then just 3 minutes later, PSG came back like a storm. Bradley Barcola, man, he was just so brilliant. He flew past everyone on the left side, put a great cross in for Dembele, which he scored, and now it was 2-1. And then 4 minutes later, PSG got the ball again near Manchester City's box. Desiree Douard from the edge of the box took a great curling shot on goal, but it hit the post, came back to Barcola, and Barcola didn't miss. And now it was 2-2. Barcola really impressed me, man. इसके कुछ transfer links हमारे साथ भी हुए थे Chelsea के साथ, and we must look into him. He's just 19 but impressive as fuck. इसके बाद तो PSG को पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा. They were just bossing the game. Dembele was nutmegging Silva. He also hit the post in the 70th minute. In the 79th minute, PSG को एक free kick मिली जो Vitinha ने ली, and he put in a pinpoint perfect cross on the head of Neves, which he just couldn't miss. And now, from 2-0 down, PSG were 3-2 up. Dembele तो जैसे Guardiola के साथ खेल रहा था like he's a 14-year-old or something. He was beating him every time on the right side. Guardiola was having a real bad time in yesterday's match. Added time में उसी की deflection से the ball came free to Ramos and he scored, and it was 4-2 to PSG. PSG totally bossed the second half after Manchester City's 2 goals, and it was one of the most entertaining games for any neutral fan to see. Manchester City are now in great trouble in the Champions League. With 1 game to go, वो playoff spot से भी बाहर हो चुके हैं. In other Champions League matches, Real Madrid beat Salzburg 5-1, Arsenal beat Zagreb 3-0, and also Liverpool won their match against Lille 2-1. But ये सारे expected results थे. एक रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड नहीं था, which can be termed as an upset, was Feyenoord beating Bayern 3-0. ये रिजल्ट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया because Bayern in their games has been playing so well, but I guess they just did not turn up yesterday. अब बस एक मैच डे रह गया है चैंपियंस लीग का, that is the 8th round. Top 8 in the table will automatically qualify for the top 16, and जो बाकी 8 रह जाएंगे, they will go through a playoff for the last 8 spots, जिसमें से अभी लिवरपूल, बार्सिलोना, आर्सेनल ये तो सब qualified है. Madrid, PSG, Juventus, these guys are in the playoff spots, and Manchester City, they are looking at elimination from the competition. It was such an enjoyable week of football for fans all across the world. अगर तुमने ये चैंपियंस लीग मैचेस नहीं देखे हैं तो अभी जाके हाइलाइट्स देखो, लाइफ के मजे आ जाएंगे. If you enjoyed the video, smash that subscribe button, like, share, comment. Also follow me on Instagram. The link is in the description below. I will see you in one of my next videos. Till then, keep the blue flag flying high.